हेलो। Hello everyone. Very good afternoon to all the moms and the ladies who are on this platform, this big platform. So first of all, I want to thank Nayana and the whole CIPLA team for this beautiful platform where we can make aware the moms and all the ladies about various aspects of the gynecological problems and the motherhood journey, the problems they are facing. So my code is Alakta D, so you can follow me on that. And today I'm going to discuss a very private and important topic, that is the vaginal care during the monsoon. So monsoon, क्या होता है कि that is the season where there we get the most of the moisture trapped inside. क्योंकि हमारे जो undergarments and all they कभी dry नहीं होते हैं and it takes a longer time to be dried. So vaginal care during monsoon, आज इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे. So it is important in all age groups, like adolescent age group हो या pregnancy हो या pregnancy ना हो, and in menopause and postmenopausal groups also. So vaginal care हम लोग अगर नहीं लेंगे and specifically during this monsoon, so it may lead to various infections like bacterial infections, fungal infections, and many other infections which can be very dangerous, and it may also lead to urinary tract infections. So today we'll discuss how to take the vaginal care during all the periods and specifically during the monsoon. So vagina, that is the lower part of the genital tract, और जो हम लोग बोलते हैं कि जो genital tract है और reproductive tract है, that is the lowermost part, and it is exposed to outside. So बहुत ज़्यादा chances रहते हैं कि वो through vagina infections can ascend up, and it can ascend through the cervix, through the uterus, and जो fallopian tubes connect हैं, that is connected to the abdomen directly. जो पेट के अंदर होता है, that peritoneum or abdominal cavity, it is connected to that. So infection, कोई भी infection अंदर जाए, if it is severe, so it can ascend up and it can go inside the abdominal cavity, causing fever होता है, pain abdomen हो सकता है, and it may lead to infertility also अगर उसमें कुछ additions वगैरह हो जाए तो. So जो lower mass part of the reproductive tract vagina है, तो उसको pH के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे. So what is the pH? जैसे pH हम लोग बोलते हैं कि वो that is वो acidic होता है या alkaline होता है. तो acidic means if the pH is less than 7. So that is the ideal one we should maintain always. So क्या होता है कि जैसे मार्केट में बहुत सारे हाइजीनिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, एंड सम मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक दैट कि हम लोग डेटॉल से वॉश कर लेंगे या गर्म पानी से वॉश कर लेंगे या कोई भी सोप, जैसे आप बाथ ले रहे हो कोई भी सोप यूज कर लेंगे तो ऑल द बैक्टीरियाज विल बी क्लीन्ड अप. तो ऐसा नहीं होता है. तो दैट मेक्स द वेजिनल पीएच अल्कलाइन, जो कि 7 से ज्यादा बढ़ जाता है. एसिडिक जो पीएच होता है वेजिना में, दैट इज क्वाइट प्रोटेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग वेजिनल. जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और फंगल इन्फेक्शन वो प्रोटेक्ट करता है अगर पीएच एसिडिक हो तो. लेकिन हम लोग डेटॉल सोप या कोई भी एंटीसेप्टिक हम लोग यूज करते हैं, दैट मेक्स द वेजिनल पीएच अल्कलाइन. सो वो क्या होता है कि वेजिनल इन्फेक्शन का रेट जो है वो बहुत बढ़ा देता है. सो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं वॉश करने के लिए? सो दो प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, लाइक वी वॉश है, इंटी वॉश है, या कोई भी मतलब जो इंटीमेट हाइजीन वॉश आता है हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, बट नॉट रेगुलरली. डे टू डे बेसिस पे हम लोग यूज नहीं करते हैं, because there are some good bacteria also. Good and bad bacteria are also there on the vaginal part and outer part of the genital tract. तो हम लोग को गुड बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके रखना है, जो कि वो बेनिफिशियल होते हैं. सो हम लोग अगर बार बार उसको वॉश करेंगे तो दैट गुड बैक्टीरिया विल बी वॉश्ड आउट. सो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एडवाइस देते हैं कि वीकली आप लोग वंस और ट्वाइस यूज कर सकते हैं, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस. एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ऑल्सो यू कैन यूज दैट ऑन रेगुलर बेसिस. जैसे 5 या 6 डेज आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हो, और उसके बाद वंस वीकली और ट्वाइस यूज कर सकते हैं. एंड वन थिंग इज कि दैट पार्ट शुड बी केप्ट ड्राइड अप, वो पूरा ड्राई रहना चाहिए. एंड वॉट एवर अंडरगारमेंट्स वी आर यूजिंग दैट शुड बी कॉटन एंड ब्रीदेबल, और लूज होना चाहिए. जैसे सिंथेटिक गारमेंट्स वगैरह हो तो यूजुअली ट्रैप द मॉइस्चर इनसाइड, तो बहुत देर तक मॉइस्चर अंदर रहती है, एंड दैट में लीड टू वेरियस इन्फेक्शंस लाइक फंगल इन्फेक्शन, जो कि बहुत कॉमन है ड्यूरिंग द मानसून.
एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी थोड़ा लो हो जाता है. दैट्स वाई क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो फ्लेयर्ड ऑफ हो जाता है. और अगर एक बार फंगल इन्फेक्शन हो जाए या कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो इजीली वो प्रेगनेंसी में क्लियर नहीं होता है. सो टेकिंग केयर ऑफ द वेजाइनल पार्ट एंड वल्वल पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम लोग क्या इफ आर टॉकिंग अबाउट दैट गुड बैक्टीरिया पार्ट. सो गुड बैक्टीरिया किस में आता है, खाने का भी आपको थोड़ा मतलब चेंज करना चाहिए. जैसे कि कर्ड हो जिसमें प्रोबायोटिक नेचुरल प्रोबायोटिक हो, तो आपको रेगुलर बेसिस पे जो कर्ड है वो लेना चाहिए. दही दही जिसको हम बोलते हैं वो उसको लेना चाहिए. एंड बैलेंस डाइट शुड बी ऑलवेज बैलेंस्ड. तो वेजाइनल प्रोबायोटिक भी हम लोग कभी कभी प्रोवाइड करते हैं इफ देयर इज रिकरेंस. अगर बार बार हो तो हम लोग उसको प्रिस्क्राइब करते हैं वेजाइनल प्रोबायोटिक्स. एंड कैसे आप मतलब मानसून के टाइम में और क्या करना चाहोगे. मानसून के टाइम में जैसे मैंने बोला कि ड्राइड अप होना चाहिए आपका अंडरगारमेंट्स. एंड इफ इट इज नॉट ड्राइड अप देन यू कैन आयरन इट एंड वेयर इट. एंड रात को आपको कोई भी लूज जैसा मतलब टाइट जो अंडरगारमेंट्स हो आप उसको मतलब ना पहनो तो अच्छा है. एंड यू कैन यूज एनी लूज ट्राउजर्स एंड एनीथिंग बिफोर गोइंग टू बेड. सो उसमें क्या होता है कि सो दैट प्लेस शुड बी क्लीन्ड एंड ड्राइड अप. So every time after using the toilet, you should use the tissue paper or any dried cloth, clean cloth, to wipe it out. So that part should be absolutely dry and clean. अगर एंड रिगार्डिंग वो जो मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि कैसे क्लीन करेंगे pubic hairs and all, so saving हम लोग सेविंग रिकमेंड नहीं करते हैं. एंड दैट एपिलेटरी क्रीम्स जो आते हैं आपका जो सेविंग जो क्रीम्स आते हैं टू पाइल ऑफ एपिलेटरी जो क्रीम्स आते हैं दैट शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज उसमें केमिकल्स होते हैं. दैट पार्ट इज क्वाइट सेंसिटिव. सो आप जो आउटर पार्ट है उसको आप मतलब जस्ट ट्रिम इट आउट एंड सो दैट इट में बी मतलब क्लीन रहता है. तो मॉइस्चर ज्यादा को ट्रैप नहीं करेगा, वाटर ट्रैप नहीं करेगा. एंड ऑलवेज कीप दैट पार्ट क्लीन एंड ड्राई. सो एंड आफ्टर वो मेंस्ट्रुएशन में हम लोग कैसे उसका हाइजीन मेंटेन करें. सो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है कि दैट इट इज अ जर्नी from where a girl enters into the puberty and womanhood. So that is the most important part. जैसे हम लोग मतलब आजकल जो average age of menarche है that is gone down to 8 years of age. So that is quite a tender age to make the kids understand कि this is a natural part. So this will happen to every woman. So जैसे kids का एज बहुत कम एज में हो जाता है तो पेरेंट्स का रोल वहां पे बहुत ज्यादा हो जाता है to make them understand कि this is a natural process and this will happen every month. So कैसे उस टाइम में उनको हाइजीन मेंटेन करना होता है क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि क्या है एंड कैसे उसको मतलब उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं. तो वो मैं बताऊंगी क्या क्या हम लोग प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और उसको कैसे मतलब हम लोग यूज करते हैं. तो फर्स्ट इज सैनिटरी नैपकिन जो कि मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है. सो वन थिंग आई वांट टू हाईलाइट कि इट शुड बी ऑलवेज कॉटन एंड सिंथेटिक नहीं होना चाहिए. एंड डोंट यूज दैट जो आते हैं आजकल सेंटेड जो आते हैं शुड नॉट एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स यू शुड नॉट यूज. इट शुड ऑलवेज बी कॉटन. And every 4 to 6 hours, you should change it. Not for a prolonged period like 12 hours, 14 hours. So blood is a very good culture medium. So if you wear it for a prolonged period, so there are chances of bacterial and fungal infections are much more. And it may lead to a very serious infections like toxic shock syndrome where multi-organ failure can sometimes happen if you wear it for a prolonged period and if you don't keep it clean. So that sanitary, apart from the sanitary napkin, there are menstrual cups and tampons also. So menstrual cups now in a fashion and they are quite good. If you that instructions are clearly written on the menstrual cups and it is available in various sizes like small, medium and large. So according to the size of the vagina or virgin or non-virgin, if the woman is married and she had 2 or 3 kids, then the size of the cups should be bit larger. So it can hold up to 50 to 60 ml or up to sometimes up to larger cups can hold up to 80 ml of blood. So it should be inserted properly so that there will be no leak. And the technique should be proper to insert it inside so that there will be no leak. And these are quite good. Those who are comfortable with the menstrual cups, then they can use it. And after using it, you should clean it properly and store in it a clean box up to the next menstruation. And if you don't wash it, so you can wash it with any antiseptics or and you can dry it up and you can store up to next use.
So menstrual tampons are also available. They can hold up to same 30 to 40 ml or 50 ml of blood. So it should be inserted properly and it should be removed. So before we think that after using the pad or after using the menstrual cups, we should wash our hand. But before inserting it also, you can wash your hand properly. Then you can use be it a sanitary pad, be it a menstrual cup. So menstrual cup, that same how to prevent the infection. So menstrual cup should be cleaned properly. It should be dried up, and before using it, you should wash your hand properly. And every 8 to 10 hours or 6 hours, you should remove the menstrual cup. And where you are changing it, that place should be also hygienic and it should be cleaned. Okay, like any office you're using toilets or anywhere public toilet you're using, so you have to be very cautious and careful. So carry that bottle of sanitizer or Dettol or antiseptic with you so that you can clean your hand and clean your that menstrual cups. And it should be stored in a proper container, dry container. So how to dispose the pads? That is also a part of menstrual hygiene. So you should not throw it into a toilet. So you should not flush it. Flush nahi karna chahiye. And it should be wrapped in a paper. And it should be properly disposed. So one question is ki, itching, a lot of itching during the monsoon period. So as I told ki, it should be that private part should be kept clean and dry. So if the moisture is trapped inside, if there is some infection, then there will be itching, and it will be followed by white discharge also, which is sometimes foul smelling or sometimes the color may be altered. So during that period, if there is itching, then as I told, keep your pubic hair trim and trim it short. Then keep the place dry and clean, and you can apply that antifungal or antibacterial ointments are available. So you can use that that ointments you can apply on the outer side, and if white discharge or purulent discharge is there from inside the vagina, there are substances which you can advise to prescribe you to push it inside for a quite a long period. So if there is one question is there, when you use the menstrual cup, if there is redness, so you see the size fits you or not. So if it is a larger size or big size, so you should choose the cup according to uh, your convenient use. And वो देखना चाहिए कि वो clean है कि नहीं है. And अगर redness या itching वहाँ पे होता है, तो you can apply some that ointment जो मैंने बोला, you can apply it. Agar redness is persisting, then you should avoid using the menstrual cup till the next periods. So uske jagah mein you can use the sanitary pad, and always cotton and loose garments are advisable. So proper disposal के बाद आता है that proper hand care is washing hands before and after the using the pads. And fourth P is period in between the periods. So period in between periods, you can same maintain the hygiene as I told. Ki you should use the intimate wash, and if there is some infection you are suspecting, sometimes longer treatment may be needed, like antifungal treatment, and we give the substitutes to push it inside high in the vagina for a long time. So my takeaway message for the moms will be ki, always you know the danger signs. And if there is itching, redness, or any foul smelling discharge from the vagina, or normally pregnancy में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा discharge होता रहता है, but if it is in excess, and if there is itching, if there is redness, if there is purulent foul smelling discharge, then you can consult your doctor, and always that part should be maintained clean. And as I told कि 9 months जैसे मॉम्स में वो बंद रहते हैं पीरियड्स, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को छोड़ के बाकी सारा चीज आपको करना चाहिए जो मैंने बताया. And during that pregnancy also, you can use the wash on alternate day or on regular basis.
So thank you all, moms, and thank you, Nayana and BabyChakra. So follow me on Alakta D for that live chats and further live sessions. Thank you.